हेलो एवरीवन, आई एम अजय फ्रॉम opendevs और आज हमारे साथ है आलोक राज हु इज अ फ्रंट एंड डेवलपर एट JLL टेक्नोलॉजीज। सो आज हम उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानेंगे और देखेंगे कैसे उन्होंने सर्विस बेस्ड कंपनी से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया। सो आलोक, आई विल लेट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। All right. Hey everyone. So I'm Alok Raz and currently my ST2 at JLL. So I started my career like 4 साल पहले मैंने start किया it's tech domain में probably. So I started my career with TCS. Then later I switched to Globant and right now this is my first product based company I would say, and I'm right now an ST2 at JLL. So that is all about this career path. And if I will talk about the tech domain, so मैं full stack JavaScript developer ecosystem में work करता हूँ. I have worked with mean stack, MERN stack. Uh, at an individual level मैंने Maven stack पे भी work किया है, but not on an enterprise level. Currently अगर मैं अपने current work domain की बात करूँ तो I'm specific right now, like you mentioned, I'm a front-end developer at JLL, where my primarily work is to work with React. On top of it, like हम लोग एक front-end micro front-end architecture को follow कर रहे हैं. So we are working on that. और कभी कभी बीच बीच में ये cloud DevOps भी आते रहते हैं. So yeah, even I'm getting some exposure around that. So this is like specific to the work I do. And yes, even I am also a part of opendevs, where we actually teach and record videos around this React ecosystem particularly. And going forward we also have a plans to cover other topic, and I think we are also starting this DSS series on our Discord community. So yeah, that's pretty much all about me. Awesome, awesome. Thanks for the great intro, Alok. So, I again want to emphasize कि आलोक ने recently एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया है. सो आई वांट टू नो अबाउट मोर ऑफ अबाउट दैट कि JLL, let's talk about JLL a bit more, and is I'm specifically looking for what is the change that you saw in a product based company like JLL from your previous service based companies in terms of culture or salary or any other things. All right, so I will basically start this shift and all that. So पहले हम लोग JLL को जानते हैं, and then I will talk about कि कैसे ये shift मैंने किया और what are the changes I am actually seeing that. So JLL is headquartered in Chicago, and probably बहुत लोग JLL के बारे में जानते नहीं है, but it's actually a Fortune 500 company और JLL की अभी फिलहाल rank 185 है. So it is also called as in the big three commercial real estate service companies. So thing is, in short, if I'll talk about, JLL is a company which provide services in real estate domain, and we build product to support its infrastructure. So that is like in the crux. So for example, अगर Google को इंडिया में ऑफिस खोलना है तो the Google will contact JLL, and JLL will take care of this property leasing और उस property का और या workplace का management and all that thing. So JLL actually बहुत पुरानी company है. It's like it was founded in 1783. It's now been 239 years पुरानी company है. But JLL was actually formed in 1999, जहां पर दो companies की merger हुई थी. So JLL actually पांच बड़े डोमेन में वर्क करता है. There is this market advisory where JLL takes care of leasing, property management and all that. Then comes the second domain where JLL deals with work dynamic, जहां पर workplace management. So it's like एक ऑफिस अगर है वहां पर जितने भी जैसे नॉन वर्किंग स्टाफ्स है, और इट कुड बी एसी. Probably you must have heard about this admin thing. So वो admin basically nothing but JLL के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि नॉन टेक डोमेन से आते हैं kind of. So that is the second domain. Third domain is the capital market, where JLL basically provide loan services and investments and do all that investment things. Fourth is the LaSalle, which is the real estate management thing. And fifth domain is the JLL Tech, where I comes in. Basically, I'm a part of a JLL technology where we actually build product to support its other four infrastructure. So that's pretty much like basic, I would say, about the JLL. Now coming about, yes, I have recently switched from a service based company to a product based company. And the I would just probably talk about in two aspects, major aspects: a culture, and then I will obviously salary part तो होती ही है. So I would say culture का मैंने एक shift में देखा है कि when I used to work at a service based company, ये एक mindset होती है ना कि अपने अपने को feature मिला है and we are supposed to build it. So we are in a hurry to just ship out the feature. It's like क्योंकि अपने टास्क मिला है, we are हम लोग वहां भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, बट वो एक क्लाइंट के होते हैं, वी आर वर्किंग इन सर्विस बेस्ड डोमेन. सो वहां पे टाइमलाइन एंड ऑल दैट होती है. तो
we build with a product with a mindset की feature completion. But when it comes to a product development, जब एक आप product based company से work करते हो, तो I have observed कि आपको एक product mindset बनाना होता है. You have to think about कि how you could make this product even better. और उस समय sometime even if you miss, obviously यहाँ पे deadlines and all होती है, but यहाँ deadlines के साथ ये भी चीज को बहुत ध्यान रखा जाता है कि what हाउ ग्रेट प्रोडक्ट यू आर बिल्डिंग. सो ये मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया यहाँ पर. ये जितनी भी चीज मैंने देखते हैं ना कि हाँ इतनी इंटरव्यूज राउंड टफ क्यों हैं, सो दिस ऑल मेक सेंस वंस यू आर इनसाइड, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको डेली उस लेवल की क्वालिटी कोड और ये जो पीआर प्रोसेस एंड एवरीथिंग होती है ना, उससे पता चलता है कि हाँ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट which millions are using and you do not want any latency and all that thing. So yes, product mindset बनाना होता है, and this shift I have like I am actually observing in myself. And अगर second aspect की बात करूँ salary, yeah, so that is actually a major thing which major role plays in. So like I said कि यहाँ पर आपकी responsibility भी बड़ी है, आप kind of एक product को on करते हो, आप उसके लिए responsible feel करते हो. So same way salary भी comes hand in hand. तो whatever I was like TCS से तो मैं compare ही नहीं करूँगा, it is like in many multiplier for sure, but like obviously 3 to 4 time 5 time तक आराम से आपको ज्यादा मिलता है when you work in a product based company. So yes, for me it is something like a dream come true, क्योंकि what shift I have observed from a service based in terms of monetary value, it was also too much greater. Once in a while मैं ऑफिस भी जाता हूँ, obviously यहाँ की जो फैसिलिटीज होती है, द एमिनिटीज यू आर गेटिंग, सो दैट इज लाइक far high good. So बहुत premium jobs लगती है to be honest when you work in a product based company. And I think who knows better than you also, Ajay. Yeah, absolutely awesome. That was great. And as work myself working at a product based company, तो मैं relate कर पा रहा हूँ part of these culture values that you talked about कि हम एक product को we feel like we are the owners of the product and we are Exactly. responsible for making it better and delivering it to of course potentially millions of customers. So totally Exactly. agree on that front. And yeah, so maybe let's talk about then how did you find this job and how did you apply for this job? ओके, मिहिर को तो आप जानती हो. सो बेसिकली मिहिर के थ्रू मैंने पिछले साल इस कंपनी के बारे में जाना था. पिछले साल like when Mihir was like looking out for job, then he joined actually Twilio. So I was like मेरी नजर थी JLL पे. तो when I actually when I was also doing this shift, जैसे मैं सर्विस में से सोच रहा था मूव आउट करने का, तो I actually got a lot of other offers like जी से बात हुई थी और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिया है. आई आल्सो लाइक क्रैक फ्यू ऑफर्स फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स. आई वोंट लाइक नेम देम बिकॉज लाइक लिस्ट काफी लंबी है, बट द थिंग इज कि मैं अभी शिफ्ट कर रहा था. देन आई आल्सो कि मैं देखा कि हाँ भाई जेएलएल भी ओपन है रिएक्ट की पोजीशन. और यस लाइक यू आस्क क्वेश्चन, सो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था. आई डिडंट आस्क फॉर रेफरल एंड ऑल दैट. ऑब्वियसली आई एम अप फॉर प्रोवाइडिंग रेफरल इफ एनीवन वांट्स दैट, बट मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था. रीजन बिंग कि मेरी प्रोफाइल काफी जगह शॉर्टलिस्ट हुई थी. ओरेकल, ग्रो एंड लाइक द कंपनीज लिस्ट गोज ऑन. देयर वाज दिस नो ब्रोकर डॉट इन. सो ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरी प्रोफाइल काफी अच्छी हो गई थी, रिज्यूमे काफी अच्छी हो गई थी. सो आई डायरेक्टली डिड अप्लाई टू जेएलएल थ्रू लिंक्डइन पोर्टल. वहां से कैरियर पेज पे जाकर तो वहां से मैंने अप्लाई किया और तुरंत शॉर्टलिस्ट भी हो गया विद इन अ डे और टू. एंड देन आई गॉट द इंटरव्यू चेन और काफी अच्छा था. सो एंड दे वहाँ की वही ऑफर्स काफी अच्छी लगी, कॉम्पिटिटिव ऑफर थी अलोंग विद द बेनिफिट. सो एंड दैट इज हाउ आई वेंट. लाइक जब अंतिम के 10-15 दिन बचे थे नोटिस पीरियड के, देन आई एक्चुअली started looking into JLL and got into JLL. So that's the thing. Got it. So you heard it from a friend, and then you applied for the job directly. And you said your resume played a big part of Yes. this, and because you were very confident कि मैं directly apply कर सकता हूँ. So maybe let's talk about your resume. Like, what do you think makes a good resume, and how did you prepare yours? ओके, सो हम लोग हमेशा सुनते हैं ये सिंगल पेज रिज्यूमे. सो एक्चुअली दैट प्लेज अ वाइटल रोल. सो इट अगेन डिपेंड्स, जैसे से आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है. सिंगल पेज और डबल पेज समथिंग यू कैन डू. वी आल्सो talk about like hear about this term called as an ATS compliant resume and all that. So yeah, that actually plays a vital role. And for me when I was like looking out for resume, obviously मैंने अपने तुम्हारे और others के रेफरेंसेस लिए थे resume को. बट द थिंग इज कि वहां पे अगेन ये चीज आती है कि किस प्लेटफॉर्म से बनाए और आर वी गुड टू गो हेड विद द वर्ड इटसेल्फ. बट वर्ड से भी आप कर सकते हो, बट थिंक लाइक
एक्चुअली टू मेक श्योर दैट कि आपकी अगर रिज्यूमे एटीएस कंप्लायंट है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो ओनली की थिंग इज कि आप अगर अपने पीडीएफ को ओपन कर रहे हो और कंट्रोल ए करने पे इफ एवरी टेक्स्ट इज सिलेक्टेबल, देन इट इज एटीएस कंप्लायंट, और हर एक टेक्स्ट एक इंडिविजुअल वर्ड में हो रहा, नॉट एज इन अ सिंगल थिंग। तो वो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है टेस्ट करने की। एंड आई हैव यूज्ड a platform called as an overleaf.com, I guess। हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक। सो वहां से हम लोग लेटेक्स रिज्यूमे मैंने बनाया था, और लेटेक्स इज द बेस्ट। वहां पे दो तीन फॉर्मेट है जो काफी फेमस है। देयर इज अ फेमस, वेरी फेमस रिज्यूमे फॉर्मेट कॉल्ड एज एन डीडी रिज्यूमे। सो मैंने बनाया, बट ऑल्दो आई डिडंट यूज दैट, इंस्टेड ऑफ दैट आई लाइक्ड वन अदर रिज्यूमे फॉर्मेट जो वहां पे प्रेजेंट थी। तो आई यूज दैट एंड आई ट्राइड एक्चुअली टू मेनी कंपनीज। ऑब्वियसली मुझे लगा था कि हाँ मेरी रिज्यूमे 1.5 पेज तक जा रही है, तो आई ट्राई टू कट इट इवन शॉर्ट, और मैंने अपने एक सिंगल पेज रिज्यूमे बनाई थी। सो इफ यू विल, अगर आप अच्छा सा फॉन्ट यूज कर रहे हो, 12 पिक्सल एंड ऑल दैट, तो अगर आप प्रिसाइज रख रहे हो तो हो जाता है, एक पेज में हो जाता है, क्योंकि आपके 3 साल की एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट कि आप सब कुछ नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली यू वांट मेरी हॉबीज क्या है, ये सब कुछ क्या है, दैट डजंट मेक सेंस। वो सब कुछ आप लोग इंटरव्यू के समय बात कर सकते हो। सो एंड ऑफ द डे वट एवर टेक वर्क यू हैव डन, highlight that, and then it's just that. So yeah, overleaf.com is a very good example. I would just suggest कि वहां से आप लोग अपने resume को बनाएं। Cool. So to summarize, you made your resume in latex from this website called Overleaf, and you made sure कि आप तुम्हारा resume ATS compliant है. So for Yes, those who don't know ATS क्या है, so just to summarize, ATS is called Application Tracking Software, and it's a tool that HRs or hiring people they use a lot. ताकि बहुत सारे, because they get tons of application, they get thousands of applications per day or per month, and to basically select very few of them, or at least the potential ones, they pass your resume through this application tracking software, and वहां से वो लोग keyword matching करके and then applying some sort of rules to find good resumes. So always make sure कि your resume is machine readable, because machine is now reviewing your resume at first stage before it even goes to a HR. So that's what Alok was talking about. Make sure right, your ATS is machine readable, and to check that, he gave you a very good trick that you can just copy paste it, and if every word is basically selectable in a text editor, then it is machine readable, and exactly. machine can do keyword matching at a reasonably well. एंड Also, जस्ट टू ऐड वन yeah. मोर थिंग, लाइक ये बहुत प्ले करता है ना कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, वहां पे इसे की हाइलाइट्स उठाओ। इवन समटाइम इट हैपेंस कि यू आर नॉट दैट गुड, बट कंपनीज को अगर आप सब कुछ आता होगा तो फिर आप कंपनी में जाके बोर हो गए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। आपको हमेशा एक लर्निंग कर्व होना चाहिए, और कंपनी भी एक्सपेक्ट करती हो है। तो इनफैक्ट लाइक इफ यू आर गेटिंग वहां से ना, कीवर्ड फाइंडिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड हाउ यू कैन फिट इन दैट कीवर्ड इनटू योर रिज्यूमे, सो दैट जब वो एटीएस की कैलकुलेशंस होती है ना, उसमें आपका स्कोर अच्छा आता है और आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट होती है। दैट इज अ वेरी गुड ट्रिक, आई वुड से। आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट, एंड ये अच्छा हुआ, इवन अमेजन के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था। सो द थिंग इज दिस ट्रिक रियली वर्क्स नाइस। Indeed, I agree. And just as a add-on, key, don't use a like one size fit all approach. Don't use the same resume for all of the job application. Look at the Yes, job description, try to exactly. match the keywords and put them in your resume, and then apply. Yes, Correct. Right. And also, if you want to look at our resume, or if you want more resources, we'll also put Overleaf DD resume link in the description. And if you want to take a look at Alok's resume or my resume, or more of such good resumes that you can take reference from, join our Discord community. Link is in the description. All right, then let's move on. Let's talk more about your preparation strategy. How did you prepare? How did you manage all the time with your current job and everything? okay, actually that's a very good question. So how I prepared for a shift, this is service based से product based का। So generally we have a mentality कि जब हम लोग अपने 9 घंटे काम करते हैं ना, तो actually we get tired, और फिर हम लोग ऐसे आराम से रेस्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं, एंड ऑल दैट थिंग। बट आई टुक अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। माय अप्रोच वाज कि भाई हाँ, मेहनत करेंगे तभी जाके कुछ फल मिलेगा। So what I did, actually made a whole plan. So in fact मैंने अपने LinkedIn पर भी शेयर किया है। So मैं अराउंड 6 मंथ का टोटल ओवरऑल स्ट्रेटेजी था कि आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द डीएसए। एंड ये मैंने मेक श्योर किया ना कि इवन हाउ मच आई टायर्ड,
डेली 2 घंटे निकालने हैं तो निकालने हैं, और अपने स्टडी को देने, लर्निंग को। इवन इफ यू आर टायर्ड, जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस हैबिट। और इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हाँ भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सो एवरी संडे आई यूज टू टेक अ कंप्लीट ब्रेक, नो कोडिंग, नथिंग एट ऑल, पूरा रिलैक्स होना, यू नो, टू रीस्टोर योर एनर्जी, एंड देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम द मंडे all the way up to Saturday. एक संडे को कंप्लीट ब्रेक एंड देन मंडे टू सैटरडे। सो दिस इज द रूटीन आई फॉलोड। और एकदम से वो प्लान किया कि हाँ डीएसए ये पढ़ना है, सिस्टम डिजाइन ये पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट और या फिर रिएक्ट की बात करूँ तो वो मैं डे टू डे पे काम कर रहा हूँ, बट लास्ट के 1 मंथ में उस पर भी फोकस करना है, कोड क्रक्स में जाना है। आई फिनिश्ड एक्चुअली दिस यू डोंट नो जावा स्क्रिप्ट बुक का सीरीज है, आई कंप्लीटेड दैट। सो ऐसे करके मैंने प्लान किया एंड आई मेड श्योर कि हाँ हर दिन इन्वेस्ट करो। इट्स नॉट कि आप एक दिन या एक महीने में आप आकर 10 घंटे रोज का पढ़ लोगे तो it will make a difference. It's all about habit and practice, I would say. Got it. Yeah. Okay. Yeah. I think I agree with that. It's all about practice. Yep. People think कि एकदम से overnight, like some people are very good, some people are not. हाँ, It's not like that. Nobody is like माँ के पेट से कोई सीख के थोड़ी आता है. किसी को right. practice तो करनी होती है, right? Exactly, exactly. All right. So you mentioned DSA, and it was a front end role. So हाँ. how does it differ for a front end person or a back end person? How did you like? How does the DSA preparation differ for Okay. each of them? या सो थिंग इज कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर था, तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर द जॉब आई वाज अप्लाइंग फॉर फुल स्टैक रोल, फ्रंट एंड रोल एंड बैक एंड रोल। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस क्वाइट डिफरेंसेस इन द डीएसए राउंड टू बी प्रिसाइज। जब अगर मैंने बैक एंड की और फुल स्टैक की दिया, वहां पर काफी एग्जॉस्टिव डीएसए राउंड होती थी, जहां पर आपसे लिटरली लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्री, सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और आई थिंक मीडियम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइम। बट हाँ ऑब्वियसली इफ आई हैवंट गिवन इंटरव्यू ऑफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, सो आई एम नॉट अवेयर कि वहां की क्या है, आई वोंट इवन टॉक अबाउट दैट। बट जो मैंने इंटरव्यूज दिया है, लाइक आई हैव गिवन फॉर ओरेकल और ग्रो, तो यहाँ से मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बैकएंड में जा रहे हो आपको एग्जॉस्टिव होना पड़ेगा, यू हैव टू बी रियली गुड एट डीएसए। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ फ्रंट एंड रोल, लाइक जैसे मैंने फ्रंट एंड के लिए मोस्टली अप्लाई किया, राइट नाउ इवन एट जेएलएल आई एम अ पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड टीम। सो यहाँ के इंटरव्यूज के जो डीएसए राउंड होते हैं ना, इट्स समहाउ रिस्ट्रिक्टेड टू एरे, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इस तीनों टॉपिक पे अच्छे से मैनिपुलेशंस कर पा रहे हो ना, देन आई थिंक यू आर रियली गुड एट इट। लाइक क्वेश्चंस आते हैं, बट इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दैट क्वेश्चन इनटू दिस थ्री डोमेन, और इस तीन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप फिट इन कर पा रहे हो ना, आई थिंक अगर आप इस पे काफी अच्छे हो। और इनफैक्ट अगर आप फ्रंट एंड रोल के लिए, तो इवन आई हैव ऑब्जर्व कि यू आर एक्चुअली इट्स, अगर आपको आप जावा स्क्रिप्ट एज एन लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, तो आपको ज्यादा अपर हैंड मिलता है। और आपको शो ऑफ करना है तो ऑब्वियसली गो फॉर टाइप स्क्रिप्ट, सो दैट इज द थिंग। सो आई एक्चुअली यूज्ड टू डू दिस टाइप स्क्रिप्ट, और वहां पे पूरा स्टैटिक टाइपिंग वगैरह करते थे, तो इंटरव्यू इम्प्रेस होता था। और एंड ऑफ द डे इवन वो भी जावा स्क्रिप्ट है बिहाइंड द हुड, सो इट वाज दैट थिंग फॉर मी। और हाँ लाइक एक्सपेक्ट करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग लाइक फंक्शंस अवेलेबल है हमारे ES6 के, दैट कुड बी, जितने भी फिल्टर्स के, सॉरी फिल्टर्स वगैरह, एरे की जितने भी प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल होती है, या ऑब्जेक्ट की, स्ट्रिंग की, वो सब आपको पता होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट ये चीजें क्रक्स होता है ना, कि दे कुड से कि हाँ डोंट यूज दिस फिल्टर, इनफैक्ट मेक योर ओन कस्टम फिल्टर फंक्शन। समटाइम्स सॉर्ट हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो ये एक ट्रिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप फंक्शन या इधर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, एरे कोई भी आप यूज कर रहे हो ना, उन फंक्शन का अगर आपको पॉलीफिल काइंड ऑफ लिखना हो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसका अपना फंक्शन इंप्लीमेंटेशन लिखें। एंड दैट इज समथिंग विच which made me stand apart, I could say. I'm not sure, but हाँ ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि if you are able to know internally ये फिल्टर या सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। सो या इन शॉर्ट फ्रंट एंड के लिए आपको यू हैव टू बी गुड बट नॉट दैट गुड, आपको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए। और द क्वेश्चंस व्हाटएवर आई हैव फेस्ड इज मोस्टली अराउंड ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड एरे, आई वुड से। Okay, so it was mostly about basic data structure, not so much about यस। graphs या like बहुत ज़्यादा trees लिखवा ले या फिर ऐसा कुछ. हाँ। Just be prepared to answer from stack or maybe queue or data structure, यस string यस algorithm, something like that, यस। or greedy algorithms you can say. ग्रीडी, यस यस ग्रीडी, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू मेंशन, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग, यस ग्रीडी, ग्रीडी आपको जानना चाहिए। इट वाज एक्चुअली जब मैं जीई की जनरल इलेक्ट्रिक के इंटरव्यू दे रहा था, वहां पे ग्रीडी के वो सेल्स बाय सेल्स स्टॉक्स के प्रॉब्लम्स आए थे, तो आई सॉल्व दैट यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम, एंड दैट वर्क्स प्रीटी
really nice. So yes, like you mentioned, हाँ, but front end के लिए ये सब है, but हाँ, अगर आप back end role के लिए जा रहे हो तो you have to be exhaustive. Yes, definitely agree. And mentioning about DSA, so a quick shout out to opendevs DSA initiative. हम लोग Discord में DSA initiative जल्दी start करने जा रहे हैं. So link is in the description for Discord channel, जहाँ पे हम लोग DSA starting से end तक cover करेंगे. And if you are a front end developer or a back end developer, you are free to join the Discord channel, and you can learn from all the other members and from great mentors there. And yeah, just to add on, ये सब कुछ फ्री में कर रहे हैं हम लोग. We are basically trying to promote the community as in open devs. तो वही हम लोग Discord पे आप लोग join करो and let's make it great. Yep. Yes, and Alok bhaiya will also be there, so he will be able to tell you the exact questions क्या पूछे गए थे उनसे, Yes. and so feel free to join. All right, so let's move on to so preparation में this DSA, that's definitely one part, but there's also for at least for you mentioned it was SD2 role, or for any senior role, people are generally asked system design as well. So Yep. what was your experience for how did you prepare? Were you asked system design, or if you were asked, what was the level of difficulty there? Okay, sure. So अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो अगेन इट्स ऑल अबाउट, इवन दो करेंटली आई एम फ्रंट एंड बट आई हैव वर्क विद फुल स्टैक, तो मैंने इसलिए वो ग्रोकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू जो एडुकेटिव पे अवेलेबल है मैंने वो कंप्लीट किया था. और फिर गौरव सेन की वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, तो आई यू हैव वॉच्ड ऑल देम एंड दीज आर रियली गुड. तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू, honestly, if I'm talking about a front end role specific, you don't have to be that great, but आपको होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की क्या होती है और when it comes to build up product तो क्या माइंडसेट होती है. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो एक स्पेसिफिक कोई सिस्टम डिजाइन की मेरी कोई इंटरव्यू राउंड नहीं हुई थी. इफ आई टॉक अबाउट द जेएलएल पर्टिकुलरली, इट वाज लाइक हैविंग अ प्रोडक्ट बिल्ड माइंडसेट कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बिल्ड करना हो तो व्हाट ऑल फैक्टर यू विल थिंक अबाउट. आपका स्कीमा फॉर्मेशन अगेन एंड ऑफ द डे वो वही आ ही जा रहा है, बट द थिंग इज यू डोंट हैव टू बी दैट पर्टिकुलर कि आप एचएलडी और एलएलडी प्रॉपर ऐसे डायग्राम एंड ऑल बना रहे हो. बट वो डिस्कशन आता है व्हेन यू वेयर यू हैव टू वेयर सपोज, जहां पर आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू नो अबाउट ऑल दोस टर्म एंड यू आर taking everything into consideration in making like kitna fast and optimized product banta hai. So for me system design was not an individual round, but it was like a mix up round where there was like we discussed about कि अगर हाँ कोई भी platform build करना है तो what are the things we have to see, हमारे like कैसे कैसे चीजों होती है और schema and all that comes into the picture, but it was not a specific round. But हाँ, अगर आप back end role के लिए जा रहे हो तो yes, there is always in a very big product based company or tech product based company I would say, जैसे कि आई थिंक अरे आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही. सो थिंग इज कि हाँ वही वहां पर एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन राउंड की प्रॉपर इंटरव्यू राउंड होती है. एंड आई थिंक इवन देन दिस ग्रॉकिंग सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू गाइड comes real handy. And you have also taken a few sessions Ajay on system design interview, so these are really good if someone is just getting started. So even आप अजय का सेशन देखो, हमारे ओपन डेस्क चैनल पे अवेलेबल है यूट्यूब पे. Yes, thanks for that. Thanks for that shout out. So, just to again summarize, he mentioned two resources: Grokking the System Design Interview. It's a course, and or it's also a book. So the link will be in description if you want to take this course, or if you are looking for free resources. So Alok mentioned one great resource is Gaurav Sen's videos. You can just search on YouTube. You'll find the playlist. Or agar if you join our Discord channel, then I generally or the team from Open Devs team generally takes these system design sessions every few weeks. जहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट स्क्रैच से ही पढ़ाते हैं, जस्ट अज्यूमिंग यू आर अ बिगिनर, एंड देन वी टीच यू बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट आर द पॉइंट्स टू नोट. So yeah, please feel free to join as well. And in Alok's experience, he mentioned that front end role के लिए you don't have to be an expert in system design. For backend role, yes, you have to be really good in system design, but for front end roles, you just need to know a basic things like how will you think about a system. You don't Yes. need to be an expert. And for that was for high level design, but for low level design, you should know some at least basic patterns of front हाँ, end. yes. What is a let's say what's a micro front end design, or let's Yeah, say if you are talking about React, what are some design patterns like exactly. render Like you prop or other like you patterns. Yeah. like you mentioned this design pattern, so this actually plays a like maybe probably I will talk it a few minutes later, but
देयर कम्स लाइक राउंड में जब होती है ना कि अगर आप इंटरव्यूज को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पे पूछा जाता है कि व्हाट अदर पैटर्न वुड यू यूज टू मेक इट इवन बेटर। सो यस, डिजाइन पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट कौन कौन से डिजाइन लाइक, और इफ यू आर वर्किंग विद एंगुलर, तो वहां पर भी अगर आप एमबीसी में एक सर्विस बेस्ड अप्रोच होती है कि सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, या फिर यू कुड गो फॉरवर्ड कि यू हैव टू बी दैट गुड कि आपको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि कब आप स्टेट मैनेजमेंट को यूज करोगे नहीं करोगे, तो वो सब चीज लाइक विट एट व्हाट पॉइंट यू आर गोइंग टू यूज एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। सो ये सब भी चीज काफी एग्जॉस्टिव डिस्कशन होता है। एंड Indeed. इवन एंड इवन इफ आई जस्ट टॉक, याद आई कि जनरल इलेक्ट्रिक में देयर वाज दिस इंटायर राउंड अबाउट द सिक्योरिटी थिंग, क्योंकि वहां पर हम लोग अगर पैकेज को यूज कर रहे हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स वी टेक इनटू द कंसिडरेशन कि ये पैकेज, क्योंकि थर्ड पार्टी पे जनरली आजकल अटैक्स भी होते रहते हैं, तो वी हैव टू थिंक अ लॉट इन दैट सेंस कि हाँ, अगर हम लोग सिक्योर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि इट इज सिक्योर्ड और नॉट वल्नरेबल टू दीस थ्रेट्स। तो ये सब भी एक माइंडसेट होना एंड डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। Yes, yes, these are some of the designs consideration you always have to make while building an app or any system. And just to give you an example, एक बहुत ज़्यादा common question जो at least मुझसे तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि when will you use Redux versus React's native हाँ, context API. So these are some of the things that you should be aware of in at least यस, system rounds. All right, so let's move on to your actual interview experience now. You have talked about your preparation strategy, what to prepare, how did you prepare, and let's talk about your actual interview experience at JLL now. What were the rounds ओके, that were taken, and in which rounds, what were the kind of questions that were asked, and how did you answer them? ओके, श्योर। सो इफ आई आंसर दैट, तो सिंस मैंने तो रिएक्ट के लिए अप्लाई किया था, तो again like I said ki I have worked with the whole full stack domain. So the first, there was in total 5 round of interview. First round was, I could say, a rapid question answer round. It was like 1 घंटे की सामने से क्वेश्चन पूछा जा रहा था and I was supposed to answer that. It was just like to and fro questions. It was like आपको कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं करनी है, कुछ कोड नहीं लिखना है. इट वाज ए स्क्रीनिंग राउंड, आई वुड से, जहां पर आपको ये पता किया जा रहा था कि हाँ, इवन इफ यू आर दैट गुड और नॉट। सो यहाँ इस इवन दो रिएक्ट स्पेसिफिक था, बट जब इंटरव्यूअर ने मेरा रिज्यूमे देखा, देन द होल इंटरव्यू वेंट इनटू दिस फुल स्टैक डोमेन, और इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम लाइक नोड जेस के इंटरनल लिबव लाइब्रेरी तक अभी हम लोग गए थे. वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ कंकरेंसी थिंग्स, और सब कुछ लाइक बेसिकली जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स के ऊपर बात हुई, रिएक्ट के इंटरनल्स, वर्चुअल डॉम, इन सब चीजों के बारे में बात हुई. So the thing was, this first round was a screening round where you are supposed to know the internals of thing and you are supposed to explain that in a basic layman's term जितने अच्छे से एग्जांपल के साथ आप समझा पा रहे हो. तो फर्स्ट वाज राउंड वाज स्क्रीनिंग राउंड. सेकंड राउंड वाज लाइक Okay, okay. मोर ऑफ, So sorry to interrupt. So first round was, so those who don't know, screening round is basically जो आपने resume पे लिखा है, they basically check you कि आपको वो आता भी है नहीं, if you are not lying, if you are good, if you are a good fit for next set of interviews, और आप crack भी कर पाओगे या नहीं. So the lesson here is don't ever lie on your resume. एग्जैक्टली, जो आता है प्लीज वही लिखो, और अगर प्रोजेक्ट्स पे लिख रहे हो तो एटलीस्ट सिर्फ वही यस, लिखो जो आपने या तो बिल्ड किया हो या फिर आपको ना ए टू जी कुछ सब कुछ आता है. तो बिकॉज एग्जैक्टली, इंटरव्यूअर्स इफ दे आस्क एंड इफ दे डिग डीपर इनटू क्वेश्चंस की प्रोजेक्ट में ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू चूज दिस टेक्नोलॉजी नॉट दिस, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. yeah, सो yeah, या. yeah. Thanks for explanation. Actually this actually makes sense. मेरी भी यही प्रोजेक्ट की भी मेंशन होती है ना, तो अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, इवन दैट केम इनटू द डिस्कशन कि आप ऐसे झूठ मूठ का तो नहीं लिख दिए हो. तो यस, मेरी फुल स्टैक हुई इवन दो इट वाज अ फ्रंट एंड, बिकॉज मैंने रिज्यूमे में लिखा था, तो दे वर जस्ट टेस्टिंग कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ. तो like Ajay mentioned, आप make sure करना whatever you know, just you put that onto resume. Don't lie about anything. So that was the first round, screening round. Second round was more like a JavaScript round, or I would say a DSA round. But यहाँ पर मुझसे वही 3 मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड आई वाज सपोज टू सॉल्व ऑल दैट विद इन अ 1 hour along with approach. So thing was happened like मैंने एक अप्रोच फॉलो किया. So then the interviewer said कि okay, let's make it a bit difficult. तो ऐसे करके डिफिकल्टीज लेवल बढ़ी थी कि हाँ, थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन को ट्रिकी करते हैं और ट्रिकी करते हैं. एंड आफ्टर अ पॉइंट इट वाज लाइक कि अच्छा नहीं, अगर ये अप्रोच नहीं दूसरे अप्रोच जाएंगे तो फिर हाउ वुड यू एबल टू सॉल्व दैट. ओके ठीक है, आप ES6 का फंक्शन यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपको कुछ कस्टम अपना फंक्शन लिखना हो तो हाउ वुड यू राइट दैट अप्रोच. एंड दिस इज वेयर आई मेंशनड अबाउट दिस writing polyfill of the function. So this is where it comes really handy that मुझे पता था कि how to write the internals, reducer functions की internals कैसे आपको implement करना होगा तो करेंगे. तो दिस इज द सेकेंड राउंड जहां पर आपकी एक्चुअली
कोडिंग हुई थी प्रॉपर से कि हाँ 3 क्वेश्चंस आए, एंड देयर वाज दिस, वो लोग अपने अपना कोड बेस लेकर आए थे, एंड देयर वाज देयर ऑन सेट ऑफ टेस्ट केसेस which you were supposed to pass those test cases. On top of it, how you could optimize more of it. So ये 1 घंटे की राउंड हुई थी, अगेन सेकंड राउंड मेरी, and it was like all about this. So once again, one thing I would just shout out about jail in like in comparison to other companies, to be honest, was the interview round was like crisp, and the results were very frequent. It's like कि आज इंटरव्यू हुई तो कल आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा, परसों आपका सेकंड राउंड, नेक्स्ट राउंड शेड्यूल होता था. So this I Okay, so really it's an like. elimination based round कि you हाँ, only go to next round if you pass this round. It's not like एग्जैक्टली, पहले यस. 5 राउंड दो फिर बोल देंगे नहीं, आप तो नो. दूसरे राउंड में हाँ, रिजेक्ट हो हाँ, गए थे. हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, वो Okay. नहीं था. एवरी डे आपको इंटरव्यू होगा, अगले दिन आपको एचआर कॉल करेंगी, एंड सी विल, और मेरे केस में सी था, तो सी विल शेड्यूल अ कॉल फॉर द नेक्स्ट डे इंटरव्यू. तो दिस इज व्हाट द गुड थिंग, और मेरे पास तो खैर 15 दिन का ही टाइम फ्रेम बचा हुआ था, तो आई थिंक कुड बी दैट. बट या ओवरऑल द एक्सपीरियंस फॉर मी वाज वेरी रियली नाइस, बिकॉज तुरंत कंसेक्यूटिव और फीडबैक भी मिलता था कि how you have done in this round, interviewers are impressed or not, और बीच बीच का है, और how you could do better in your next round, and how like वो लोग भी चाहते हैं कि you get better. End of the day HR भी यही चाहते हैं. तो even I was getting suggestions like what to study and what not to. So in fact it's not just about JLL, even other companies भी HR suggest किए थे. So like this is like pretty much about the second round. So obviously इसमें मैं select हुआ, then I moved to the third round. और थर्ड राउंड बेसिकली इंटरव्यू लेने मेरे एक ऑन साइट टीम से आए थे. सो रात के समय मीटिंग स्केड्यूल हुई थी. सो यूएस में एक टीम के ही मेंबर थे. सो बेसिकली ही टुक एन इंटरव्यू, ही टुक माय इंटरव्यू. सो अगेन वो भी 1 घंटे का ही था, एंड द बेस्ट थिंग, they really respect your time. They were very punctual, and 1 घंटा होते, even if they have further question, even if so एक 5 मिनट तक का एक्सटेंड मैक्सिमम करेंगे, एंड दे विल रिस्पेक्ट योर टाइम, एंड इंटरव्यू क्लोज होता था. दिस बिहेवियर आई रियली लाइक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वर्क के साथ साथ ऐसे इंटरव्यूज देना, इट समटाइम बिकम्स वेरी हार्ड टू मैनेज. सो आप रियली वांट टू वर्क ऑन a like strict timeline. So third round was mostly about कि पहले मुझे कंपनी का इंसाइट्स दिया गया कि what type of problem they are solving, and then it was a machine coding round, so where I was supposed to build a application using React. So मुझे मतलब 45 मिनट का टाइम दिया गया हुआ था कि हाँ एक ऐसा रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, अगेन यू कम एंड ज्वाइन अस ऑन टू डिस्कॉर्ड टू नो अबाउट दिस क्वेश्चंस. बट हाँ, सो क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, एंड नेक्स्ट 15 मिनट डिस्कशन ये था कि फाइन यू हैव बिल्ड योर प्रोडक्ट, एंड यहीं पर वो डिजाइन पैटर्न आया था कि you have written your logic into a single component, but what if you are supposed to use this different design pattern. तो आप होता है ना कि ये होता है कि कस्टम हुक्स की पैटर्न होती है, फिर वी हैव अ hook pattern for this this render props functions and all that thing. तो यहीं पर वो डिस्कशन वाइटल प्ले हुआ था, and you are supposed to explain that how you could make this overall product a better and more optimized. So in fact वो obviously 40 मिनट में आप एक पूरा प्रॉपर ऑप्टिमाइज बना नहीं पाओगे. So first you build a solution, and then you suggest ki what are the improvement you can do. So this was like all about the machine coding round, and so this was really nice experience for me. Interviewer was so nice to me, so it was really great. So ये रही थी मेरी थर्ड राउंड. एंड आफ्टर आई दैट, गेस मशीन कोडिंग राउंड को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ. जब लोग सुनते हैं ना कि व्हाट इज मशीन कोडिंग, कभी सुना ही नहीं होता बहुत लोगों ने तो. हम्म. सो दिस इज मशीन कोडिंग राउंड. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू basically build something from scratch and build a system from scratch, and yeah, this is how you prepare for it. यस, इट कुड बी अ वेरी स्मॉल सॉल्यूशन इटसेल्फ कि हाँ भाई आपको डेटा लाना है और टेबल में रेंडर कराना है. इट कुड बी दैट सॉर्ट. और अब जावा स्क्रिप्ट की बेस की बात करो तो हम लोग देखते हैं ना कि ड्रॉप डाउन और मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन, स्टार रेटिंग वाली इम्प्लीमेंटेशन, तो यही सब एग्जांपल्स होते हैं मशीन कोडिंग राउंड पे. बट इंपॉर्टेंट क्रक्स यहाँ होता है कि वंस यू डेवलप द सोल्यूशन, हाउ यू कुड मेक बेटर ऑफ इट. सो मेरी रिएक्ट की इंटरव्यू थी, इट वाज लाइक रिएक्ट, हाँ लाइक JLL was more concerned with TypeScript. हम लोग यहाँ पे TypeScript स्टैटिक टाइप के साथ बहुत ज्यादा. तो हाँ, इस राउंड में मैंने TypeScript यूज करना था, React with TypeScript, and on top of it I was supposed to static type everything. और यहाँ पर वो जेनरिक टाइप्स और टाइप एक्सटेंशन वो होता है पिक
और ओमिट, इन सब के बारे में काफी लाइक इंटेंस डिस्कशन हुई थी विद द इंटरव्यूअर. सो दिस वाज लाइक माय थर्ड राउंड, एंड यहाँ तक मुझे लग गया था कि हाँ लाइक इन लोगों का यही 3 मोस्ट टेक्निकल राउंड था, जहां तक मुझे हाँ लाइक एचआर ने मुझे सिग्नल दे दिया था कि यस आई एम ऑलमोस्ट सिलेक्टेड. सो इट वाज लाइक दैट. और अब सैलरी एंड ऑन अ हायर नोट, लाइक ऑन अ लोअर नोट आई कुड से डिस्कशन होनी स्टार्ट हो गई थी. बट फोर्थ राउंड वाज काइंड ऑफ अ मैनेजरियल राउंड, जहां पे ये वैल्यू मैचिंग हो रही थी. एंड अगेन, even if I was selected as a technical, but this round was important because JLL actually believes a lot in their values. So यहाँ पर उन लोगों का वही होता है कि how you fit into their values and what are my expectation. Like मैंने एक सर्विस बेस से अगर प्रोडक्ट बेस में स्विच कर रहे हैं, तो दे एक्चुअली इन दिस राउंड टेस्टेड मी अगेन. ये भी मेरा यूएस टाइम जोन में हुआ था, लेटर नाइट में. सो मैनेजर वहीं के थे. तो basically we had a very good discussion around ki how I would fit into the team, how I could contribute into the team, and do I have the product build mindset or not. Even though I have worked with service based, but होता है ना कि अपन लोग इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करते हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी थिंक अबाउट हाउ वी कुड स्केल इट. सो ये चीज की एक जनरल डिस्कशन हुई थी, एंड वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन की they were really impressed. Actually, one highlight I would say कि make sure you better present your GitHub in a good way, क्योंकि GitHub वो लोग मेरा चेक किए थे. एंड वी हैड a really good discussion about this micro front-end architecture, क्योंकि मैंने एक Udemy का कोर्स किया था. Even if you have some unfinished course on Udemy, make sure you complete that and prepare a repo or a learning outcome out of it. So मैंने blogs वगैरह लिखता था. तो मैनेजरियल राउंड में मेरी ये सारी कुछ डिस्कशन हुई थी, एंड दे ऑल रियली लाइक दिस कम्युनिटी का थिंग. सो these are the things which even हम लोगों को और प्रमोट करता है to do even better. So yeah, this is like the thing. ये रही थी हमारी fourth round, where it was like all about how you fit in and are you a good match or not. And then fifth round was like all about HR, जहाँ पे I guess there were before, sorry, just stop you. So fourth round sure was about magic values, or not some exactly magic हाँ values, but हाँ basically हाँ value match, if you match or if you are aligned towards company's values or goal not. And exactly what, like I don't know about much about service based companies, but product based companies में ये round बहुत ज़्यादा common होते हैं, जहाँ exactly पे companies and some companies even openly publish their values. For example, Amazon के leadership principles है. Google mm, specifically takes a round called Googliness round. And mm, Twilio, where I work currently, they have also there something called magic values. They also mm, publish it openly. You can just go look at their values on their open public website and prepare such scenarios. Let's say they value some certain things. Then you should be able to let's say give an example for each of those values. justify That yes how did you exhibit that value in some sort of environment. Let's say you did some project, you handled some scenario, you handled some customer where you showed this value. So ऐसी yes situation, be prepared to answer such questions in these yes. rounds. यहीं पर ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है ना कि वेयर दिस present a scenario and you explain that scenario with your own experience and justifying their values ki how you are fitting into that. So it's all about selling yourself in a good way that you actually fit in there. So and like you mentioned Ajay, that yes, it's always a great idea to go and watch their values and explain and justify yourself that how you yourself align with these values. And this is like again it becomes an important round for them sometime. Reason being like because end of the day you're supposed to work with them, so how you are going to be a great fit over there. So yes. Yes, let's proceed to your last round, I guess. हाँ yes. So last round again HR round, it was end of the day वहां पे अलग बातें भी हुई कि why I'm looking for a switch so certain like एक साल के बाद ही switch कर रहे थे और what are my future plans, तो ये सब बात. But the main in discussion was around the salary expectation. So again यहाँ पे बस एक टिप्स दूंगा कि don't hesitate to ask some number इफ यू थिंक यू डिजर्व दैट. यहाँ होता है ना कि भाई ऐसे बोलेंगे क्या सोचेगा वो लोग, और ऐसे करके हम लोग वो बोलते ही नहीं है. तो थिंग इज दैट कि अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, इफ यू हैव सम ग्रेट ऑफर इन हैंड, डोंट हेसिटेट टू आस्क ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू फील लाइक यू डिजर्व दैट एंड यू आर जस्टिफाइंग दैट. और ये एक चीज हम लोगों को पता चल जाता है कि हाउ वेल योर इंटरव्यूज हैज वेंट. सो यू कुड जस्ट आस्क दैट नंबर. सो दीज आर द थिंग्स आई वुड से कीप इन माइंड. Okay, so that was about your experience, your interview experience at JLL. Now, I just have one last question. What advice would you give to job seekers, like
कैसे prepare करें, how to stay motivated during the preparation, and if you are stuck during interview or anywhere else, like how to overcome or how to tackle such situations. Yeah, sure. So yeah, first of all, हर एक का अपना अपना प्लान होता है. Like there could be reasons that जो plan मेरे लिए work किया वो आपके लिए work नहीं करेगा. So first of all, as per your bandwidth, as per your availability, make sure once you have made up a mind that you are going to switch or you are going to look for a better company. So एक प्लान प्रिपेयर करो अपने हिसाब से. यू नो योर ओन वीकनेसेस कि तुमको कहाँ पे प्रिपरेशन चाहिए, कहाँ यू आर ओके एंड फ्रॉम वेयर यू नीड गाइडेंस एंड ऑल दैट. So first of all, do that. Make sure you have a plan, a strategy, everything in place, and then comes the following it. Like never ever like drop on that the plans which you have made. Make sure you are following each and every step of it. On top of it, it's always have good to have like a friends in common. Like जैसे मेरे केस में तुम अजय हो या फिर मिहिर है. So we have things like जब भी मैं कुछ stuck feel करता हूँ या if I'm having some limitations or something, so I connect with you guys. So same way हर एक के लाइफ में कोई ना कोई अच्छे अच्छे फ्रेंड होने चाहिए to whom they can seek for advice or something of that sort. If not, then again you can always look out for like outside of your community to look for the mentorship and all. Like आजकल बहुत सारे Discord community like the one we are also doing, one can come over here too and seek for guidance and all that sort. So that is the first thing. Next things comes, let's say you started preparing and now you are good and feeling confident, resume ban gaya hai, sab kuch ho chuka hai. So you start applying for the targeted companies, and if at all if your resume is not getting shortlisted, then seek for referrals. Even I am like open for providing referrals. So on LinkedIn you can make connection and do all that stuff. On top of it, the next thing comes in, like if you are okay, you got selected and you are now into the interviews. So one thing I would just say that it's not always that your interview is going to be great. देयर विल बी अ टाइम जब आपको फेलियर फेस करना होगा और आप बहुत लो फील करते हो. सो दैट इज द टाइम यू नीड टू अगेन. मेरे केस में क्या था कि आई यूज्ड टू सिंक विद माय फ्रेंड एंड फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कुड आई नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन. सो द सेम वे इट्स लाइक ऑलवेज ऑल अबाउट कि स्टे मोटिवेटेड, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो. इट्स नॉट लाइक एक इंटरव्यू इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. हो सकता है ये इंटरव्यू खराब गया, नेक्स्ट कंपनी की किसी और कोई और इंटरव्यू तगड़ी होगी. So just try to learn from your mistakes and make yourself a better version of yourself, I will say. So yeah, that is all the advice I could give right now. So Great, thanks for that such wonderful words, Alok. And I agree with that advice. कि uh, failures होंगे, definitely होंगे. And let me tell you, there's no company जो आपको अगर आपने एक इंटरव्यू खराब भी करा ना, they just blacklist you कि आप yes, कभी अप्लाई नहीं कर सकते. That's fine. अगर आज फेल हो गए तो 6 महीने बाद फिर से अप्लाई कर लेना, फिर से कर देना, exactly. एंड नेक्स्ट कंपनी में मिल जाएगा. क्या हो गया? तो ऐसे फेलियर से कभी भी पीछे नहीं हटना है. डोंट वरी. So keep applying, keep practicing, and you'll get the job for sure. So, and Mhm. I think another point you mentioned is community helps. So yes, Yes, and we also have that community, and we offer similar kind of things in our community that you can get advice. You can find your peers जो कि similar companies और similar चीजें prepare कर रहे हैं. So you can find such colleagues or batchmates or something like that in our community as well. And we also, as mentor, and there are other mentors who would be very willing to teach yes, you stuff as well. So make sure you join our community. The link is in the description, and also make sure you subscribe to our opendevs YouTube channel as well, so that you don't miss yes. any other upcoming videos as well. And with that, I think let's wrap up the session. It was really great to have you, Alok, and to Yep. listen to your experience at JLL. So yeah, let's Yeah, wrap up. we should actually do this more often because this is something going to give other a really good insight. So yeah, thank you for having me. I would say. Indeed. Hopefully, it was helpful for all of you, and Yeah, have a great rest of your day. And see you next time. Bye. sure. Bye everyone.